Dear students, today I am Dr. Ashok Kumar Saini, Associate Professor in Mathematics in Banwarilal Jindal Soiwala College, Tosham. District Bhiwani, Haryana. Today I will deliver lecture on number theory and trigonometry for the students of BA, BSC, first year, semester second. The topic today I will cover is inverse hyperbolic functions. Inverse hyperbolic functions. This is inverse hyperbolic functions in terms of logarithms. This is inverse hyperbolic functions. If x and y are connected by the relation sin hyperbolic y is equal to x, then y is called the inverse hyperbolic sine of x and is expressed as y equal to sine hyperbolic inverse x. Again दोबारा करते हैं, x and y are connected by the relation, क्या है, साइन हाइपरबोलिक y इक्वल टू x अगर इस तरह से कनेक्टेड हों, देन y इज कॉल्ड इनवर्स हाइपरबोलिक साइन ऑफ x. y is called inverse hyperbolic sine of x and is expressed as y equal to inverse hyperbolic sine of x. Inverse hyperbolic sine of x. Again, if cos hyperbolic y equal to x, then y is called inverse hyperbolic cosine of x. Inverse वर्ड पहले है, फिर हाइपरबोलिक है, फिर कोसाइन ऑफ x. कैसे हम पढ़ते हैं इसको, इनवर्स hyperbolic cosine of x and is expressed y equal to inverse hyperbolic cosine of x. Similarly, we can define inverse hyperbolic tangent of x, inverse hyperbolic cotangent of x, inverse hyperbolic secant of x and inverse hyperbolic cosecant of x. Journal and principal values. Like other inverse circular functions, the journal values of inverse hyperbolic functions are expressed by writing the first letter as capital, जैसे हमने इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में किया था. द जर्नल वैल्यू है ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन are expressed by writing the first letter as capital लिखते हैं, उसमें भी ऐसे लिखा था capital, and the principal value in the ordinary way, उसमें small लिखते हैं. principal value में small लिखेंगे और journal value में capital लिखेंगे. hence we denote the journal value of inverse hyperbolic functions as inverse hyperbolic sine of x, inverse hyperbolic cosine of x, inverse hyperbolic tangent of x, etc. अब फार्मूले ये इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथम, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथम्स. to prove that sine inverse hyperbolic sine of x is equal to n pi iota plus minus 1 की पावर n logarithm of x under root plus under root x square plus 1 inverse hyperbolic cosine of x equal to 2n pi iota plus minus logarithm of x plus under root x square minus 1.
and inverse hyperbolic tangent of x is equal to n pi iota plus half log of 1 plus x divided by 1 minus x. Sin hyperbolic inverse of x equal to n pi iota plus minus 1 की पावर n log of x plus under root x square plus 1. Cos hyperbolic inverse x is equal to 2n pi iota plus minus logarithm of x plus under root x square minus 1. इनवर्स हाइपरबोलिक n पाई आयटा ऐड होगा तो n पाई आयटा ऐड होगा कोस में, टेंजेंट में n पाई आयटा, लॉगरिथम x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉगरिथम टू इनवर्स हाइपरबोलिक कोस इनवर्स x टू n पाई आयटा प्लस माइनस लॉगरिथम x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इनवर्स हाइपरबोलिक टेंजेंट x इक्वल टू n पाई आयटा प्लस हाफ लॉग ऑफ 1 प्लस जेड बटे 1 माइनस जेड. इनको प्रूव करना है. वी हैव टू प्रूव दिस. तो लेट इनवर्स हाइपरबोलिक साइन ऑफ x इज इक्वल टू y. देयरफॉर x इक्वल साइन हाइपरबोलिक y एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इज इक्वल टू e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y बटे 2 और 2x इक्वल टू e की पावर y माइनस 1 बटे e की पावर y और e की पावर 2y माइनस 2x e की पावर y माइनस 1 इक्वल टू 0 विच इज़ ए क्वाड्रेटिक इन e की पावर y. e की पावर y में क्वाड्रेटिक है और e की पावर 2y माइनस 2x e की पावर y माइनस 1 इक्वल टू 0 which is a quadratic in e की पावर y. Solving e की पावर y equal to 2x plus minus under the root 4x square plus 4/2 is equal to x. 2 से 2 कट गया, x plus minus under root x square plus 1. Therefore y equal to 2r pi iota plus logarithm of x plus minus under root x square plus 1 where r is an integer. दोबारा करते हैं, कोई बात नहीं. लेट साइन इनवर्स हाइपरबोलिक साइन ऑफ x इसको बाई मान लो जिसको हमने, ठीक. तो x निकालो यहाँ से, साइन हाइपरबोलिक y और इसका फार्मूला है कि पर y माइनस e की पावर माइनस y बटे 2. अब ये एक इक्वेशन आ गई है, इसको 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ और इसको क्वाड्रेटिक बना दो. e की पावर 2y माइनस 2x e की पावर y माइनस 1 इक्वल टू 0 विच इज क्वाड्रेटिक इन e की पावर y. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सॉल्विंग e की पावर y तो b स्क्वायर b माइनस b 2x है प्लस माइनस अंडर द रूट 4x स्क्वायर प्लस 4/2 तो ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया. x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 y इज इक्वल टू 2r पाई आयटा प्लस logarithm of x plus minus under root x square plus 1 where r is an integer. और wait,
wait for a minute. It, it is become dull. The screen is become dull. So please wait till it is. तो y इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्वाड्रेटिक का ये जो ठीक है। wait for a minute. I think it will be clear after short time. Some dullness is there. Okay. So y equal to, I think if there you can view this lecture online from college website www.BLJS college collegee.com. It is not clearing. I think we'll stop here the lecture. तो ये आपका क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू 2r पाई आइटा प्लस लॉग ऑफ x प्लस माइनस अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस 1 वेयर r इज एन इंटीजर। तो y इज इक्वल टू 2r पाई आइटा प्लस लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस आ गया ना, ये दो आ गए हैं। e की पावर y है इस लेफ्ट हैंड साइड में, तो e की पावर y को आप ये